Good morning. Welcome to the class of history of class 8. This is chapter 3 and part 5 video. You can start page number 30. Yes, it's page 30. And the topic of discussion is course of the French Revolution. We have already discussed first 2 points in the last video, that is the tennis court oath and the fall of Bastille. And in this very video we will be discussing the remaining 2 points, that is the split of the Legislative Assembly and the region of terror. These 2 points we will be discussing in detail in this very video, right? So let's start the split of Legislative Assembly. Here it is saying the new Legislative Assembly soon split into 2 groups, the Jacobians and the Girondists. Girondists and Jacobians are the 2 groups in which the Legislative Assembly were split into. What about Jacobians? Who were the Jacobians? Let us define the Jacobians. The Jacobians were violent revolutionaries who advocated greater and faster changes in the government of France. Jacobians were violent revolutionaries. Violent means वो हिंसक क्रांतिकारी थे. Jacobians जो थे वो हिंसक क्रांतिकारी थे and they believed in faster changes in the government of France. वो चाहते थे कि फ्रांस की गवर्नमेंट में बहुत तेजी से और बहुत तीव्र गति से बदलाव हो. This is all about Jacobians. They were known for their extreme radical ideas and were led by Jacques Danton, who was a lawyer, Jean-Paul Marat, who was a journalist, and Maximilien Robespierre, who was an advocate. These were the people who were the Jacobians, right? Nextly, they mostly belong to the middle class. The Jacobians were the people who belong to middle class. Were less educated. They were not highly educated. They were less educated, uncultured and unprincipled. वो ज़्यादा सुसंस्कृत नहीं थे और वो सिद्धांतवादी भी नहीं थे. They wanted to establish a republic in France and wanted to give maximum power and right to the public. What did they wanted? They wanted to establish a republic in France. What do you mean by republic? वर्ड रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं? रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन. रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन. सो द जेकोबियंस, one among the 2 groups, that is Jacobians and Girondists, the Jacobians wanted to establish republic in France. So the republic का मतलब ये होता है the head of the state is an elected person. तो वो ऐसा चाहते थे कि जो फ्रांस का हेड हो वो elected person हो, right? And another thing they wanted that the right, maximum power and right to the people, और maximum power और अधिकार जो हो वो लोगों के हाथ में हो, not in the hand of a monarch. मतलब राजा के पास शक्ति ना हो, जनता के पास शक्ति हो, और जो हेड ऑफ द स्टेट हो वो हेरिडेटरी नहीं हो बल्कि एक इलेक्टेड पर्सन हो. दैट इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस वाज द व्यू ऑफ Jacobians, right? Next is the Girondists. On the other hand, were educated, cultured and disciplined. Opposite to Jacobians, the other group, that is Girondists, were educated, disciplined and cultured. वो educated भी थे, disciplined भी थे और cultured भी थे. ठीक है? They were very good orators and impressed the people with their speech. They too wanted to end monarchy in France. वो बहुत अच्छे ओरेटर्स थे. व्हाट डू यू मीन बाय ओरेटर्स? ओरेटर्स करने का मतलब बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा स्पीच देते थे. एंड दे इम्प्रेस द पीपल विद देयर स्पीचेस. वो अपने भाषण से जो जनता है उसको इम्प्रेस करते थे. और उनका भी ये मानना था कि वो फ्रांस से मोनार्की को खत्म करना चाहते थे. मोनार्की मीन्स हेरिडेटरी रूल को खत्म करना चाहते थे, जहां राजा का शासन नहीं हो बल्कि जनता का शासन हो. ये उनका भी मानना था. द इंपॉर्टेंट लीडर्स वेर वर्गिनॉड, ब्रिसॉट, मैडन रोलैंड, कॉर्डे एसेट्रा. The Girondists were against the supremacy of Paris over the province and advocated the dissolution of Commune of Paris. मतलब पेरिस का सुप्रीमेसी को वो खत्म करना चाहते थे और कम्यून का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको भी वो डिसॉल्व करना चाहते थे. वो चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो और जो कम्यून के पास शक्तियां हो वो खत्म की जाए. ठीक है?
The difference of opinion led to war between Jacobians and Girondists that resulted in severe bloodshed and carnage of men. ये जो difference in opinion है, ये जो दो ग्रुप है, एक गिरोंडिस्ट और दूसरा जैकोबियंस, that led to war between these two groups, and that resulted in severe bloodshed. Bloodshed means बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, and carnage means mass killing of the people. Women and children, पुरुष भी मरे, महिलाएं भी मरी और बच्चे भी मरे due to the war between these two groups. Consequently, the Legislative Assembly was dissolved on 20 September and National Convention was convened to draft a new constitution for France. और एक नेशनल कन्वेंशन को बनाया गया ताकि फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा सके. National Convention declared the elimination of monarchy and establishment of republic in France. National Constitution इस बात को एश्योर करता है कि फ्रांस में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और मोनार्की खत्म किया जा सके. It established liberty, equality and fraternity as official slogan of the republic. ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, this became the slogan of the republic. The convention also put Louis XVI on trial and found him guilty. जो कन्वेंशन है ये लुईस 16 को क्या हुआ, ट्रायल पे डालता है मीन्स उसके जो अपराध है उसकी सुनवाई करता है और उसको गुनाहगार पाता है. तो इससे क्या होता है आगे. Consequently, Louis XVI was hanged on 21 January 1793 और उसको फांसी दे दी जाती है लुईस 16 को, जो कि वहां का मोनार्क था. वो 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दी जाती है. With this, monarchy came to an end completely in France. इसके साथ ही लुईस 16 को फांसी दिए जाने के साथ ही फ्रांस में मोनार्की कंप्लीटली खत्म हो जाता है. फ्रांस में मोनार्की कंप्लीटली खत्म हो जाता है. नेक्स्ट इज रीजन ऑफ टेरर. वी हैव कंप्लीटेड दिस थर्ड पॉइंट. वी हैव आल्सो कंप्लीटेड दिस थर्ड पॉइंट. ऑल द फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर ओवर. नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, रीजन ऑफ टेरर. In April 1793, the convention set up a public safety committee whose prominent members were Danton and Robespierre, etc. The committee undertook both internal and external reforms and set up a radical court for the speedy trial of cases. It declared war against the leaders of Girondists. और गिरोंडिस्ट के खिलाफ जो है ट्रायल शुरू किया जाता है. ट्रायल मतलब सुनवाई, ठीक है. जो पब्लिक सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है जिसके प्रोमिनेंट मेंबर कौन थे, डैंटन. Who was Danton? Danton was a Jacobian and he was a lawyer. ठीक है. And next was Robespierre, who was also a Jacobian and was an advocate. The Jacobian formed a temporary powerful government whose slogan was the rule of terror based on force. उसका क्या नारा था, रूल ऑफ टेरर, मतलब आतंक का शासन बल के जोर पे, मतलब ताकत के आधार पे रूल ऑफ टेरर, मतलब आतंक का शासन, ये उसका स्लोगन था. Soon differences in opinion over working of the government arose between Danton and Robespierre. अब Robespierre, Danton दोनों के बीच में ओपिनियन का क्या हो गया, क्लैश हो गया. What happened then? Danton was finally beheaded with guillotine in April 1794. Danton को क्या किया जाता है, उसका सर कलम कर दिया जाता है. Robespierre took the reins of administration in his own hands. अब Robespierre अब अपने हाथ में कमान ले लेता है, अब अपने हाथ में शासन की बागडोर ले लेता है एडमिनिस्ट्रेशन का. By an ordinance, he guillotined as many as 1376 people. और वो 1376 लोगों का सर कलम करवा देता है. As many as 1376 people in just 1.5 months. सिर्फ 1.5 महीने के समय में, मतलब 45 दिन के अंदर में वो 1376 लोगों का सर कलम करवा देता है. The enemies of Robespierre joined hands and held him responsible for the instability of the country. और रॉबेस्पियरी के जो विरोधी थे वो ये बोलते हैं कि जो कंट्री में इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, उसका जिम्मेवार रॉबेस्पियरी है. ठीक है. Consequently, Robespierre was also beheaded. Consequently, Robespierre को भी सर कलम कर दिया जाता है on
29 July 1794 along with 20 companions who thus the region of terror came to end. इसके साथ ही region of terror आतंक का शासन खत्म हो जाता है, ठीक है. The National Convention dissolved the Constitution of 1793 and adopted a new Constitution in 1795 और 1795 में नया Constitution adopt किया जाता है. The new Constitution provided for the formation of Borghese Republic. Borghese Republic का formation होता है. The government formed under this Constitution was called directory. इस संविधान के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है उस गवर्नमेंट का नाम होता है डायरेक्टरी. The directory ruled for 4 years and was overthrown by Napoleon Bonaparte in 1799. और डायरेक्टरी को तब हटाया जाता है जब नेपोलियन बोनापार्ट अपने हाथ में वहां की बागडोर लेता है. वो कब लेता है? 1799. With this, your 4th point is clear. We have discussed all the 4 points of the course of French Revolution. I hope you understood the point. With this, we have completed this very section. Till then, take care and stay safe. Bye.